So, greetings to everyone. I am Bhavya Duggal of D.A.V Public School, Kailash Hills, and I welcome you all in this session of Graduate Scholar Talk series. आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड fascinating टॉपिक है and we often see people talking about this so casually and so frequently. And even news channels are filled with such news. Amid the ongoing Russia-Ukraine wars, क्या रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करेगा? जब भी मैं ऐसी न्यूज देखती थी, मैं हमेशा सोचती थी कि क्या न्यूक्लियर पावर के बस दो ही एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड द अदर वन इज न्यूक्लियर वेपन्स. बट वी ऑलवेज डिस्कस मोर इन डिटेल अबाउट द न्यूक्लियर वेपन्स. सो व्हाई इज दिस सो? मैं हमेशा ये सोचती थी. So, I would like to present my views today on nuclear power and mankind, India's future. But before that, I would like to thank GSTS for giving me this opportunity to present my views on this topic. And I would also like to thank today's guest of honor, Sir. So, these are the key highlights of the of the topic that I will be presenting today, the agenda. The first one is कि I will be providing a general introduction. हम न्यूक्लियर पावर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी मैं एक बेसिक डेफिनेशन प्रोवाइड करूंगी. देन आई शैल बी टॉकिंग अबाउट इट्स हिस्ट्री एंड इट्स ओरिजिन एंड हाउ इज इट डिस्कस्ड इन बुक्स एंड मूवीज एंड अदर साइंटिस्ट्स एसोसिएटेड विद इट. देन व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ न्यूक्लियर पावर. देन what is the share of nuclear power? Like, how does the world look towards nuclear power and what is India's share in it? Then, other than the nuclear weapons and your nuclear power plants, what are the other ways in which you can use nuclear power? And the last one, India's recent initiatives, what will be the future nuclear projects? And in the last, I will be wrapping up myself with my perspective as what do I think about nuclear power. So let us give it a good start. So the first one is introduction. अब nuclear power क्या है? जब भी हम nuclear reactions, for example nuclear fusion, nuclear fission and nuclear decay को use करके उसमें से जो energy extract होती है, निकलती है, उसको हम as electricity use करते हैं. That is termed as nuclear power. So now I would like to peep in its history कि nuclear power की क्या history रही है. So अब हम nuclear power की बात करें तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट का नाम आता है? J. Robert Oppenheimer. So he was known as the father of first nuclear atomic bomb. जो first atom bomb था उसको इन्होंने ही बनाया था and he played a very intensive and significant role in it, the Manhattan Project, about which is related to this atom bomb only. जो भी उसके steps थे जैसे कि researching थे, then bombs की testing भी करी जाती है before its real operation. तो उन सब में इन्होंने बहुत ही intensively काम करा and बहुत significant role रहा इनका. अब मैंने जब atom bomb की बात करी है so it will not be fair if I do not mention Hiroshima and Nagasaki. So on 6th August 1945 and on 9th August 1945, America dropped nuclear bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki amid the ongoing World War II. So अब जो इन्होंने atomic bombs drop करे थे World War II के दौरान, उससे वहां पर इतना ज्यादा destruction हुआ है कि that is unimaginable. ये उन लोगों को ही पता है, to be if I speak candidly, उन्हीं लोगों को पता है जो उस एरा में थे. तो इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, वहां का एटमॉस्फेयर खराब हुआ, वहां का इकोसिस्टम खराब हुआ, देन वहां के बहुत सारे लोगों की डेथ हुई एंड वहां के नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स बट जो वहां पर आपके प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, उन पर भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ. एंड दीज फोटोज स्पीक फॉर देमसेल्व्स.
The upper one is for the Hiroshima and the lower one, this is for the Nagasaki. I need not describe these photos. These photos speak for themselves. So अब यहाँ पर एक और साइंटिस्ट का नाम आ जाता है, होमी जे भाभा. So he was an Indian nuclear physicist and after independence जो भी इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हुए थे उसमें इनका सबसे बड़ा रोल माना जाता है. And he is known as the father of India's first nuclear program. जो भी स्टेप्स होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स में, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग होती है या फिर और कुछ न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल इनका था. He played a significant role in it and he actively participated in all the events which were involved in the nuclear program. Now अब मैंने इन दो साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन तो कर ली, बट अब इनकी मूवीज के बारे में भी आई वुड लाइक टू डिस्कस. The first one is Oppenheimer. As the name suggests, it is based on the life of the scientist J. Robert Oppenheimer, and it is a blockbuster film, so to say. The another one is a television series, Rocket Boys, which describe the lives of Vikram Sarabhai and Homi Bhabha, and you can obviously watch these movies and television series and get a glimpse of their lives. अब यहाँ पर एक और साइंटिस्ट का नाम आ जाता है, और he was an Indian scientist only, Raja Raman. So Raja Raman was an Indian nuclear physicist and post independence जो initial nuclear programs होते थे, nuclear endeavors जो थे इंडिया के, उसमें he played a very important role. He worked under Homi J. Bhabha and seeking his guidance. सबसे बड़ा रोल उसमें इनका भी माना जाता है. One of them is Pokhran the First. Pokhran the First, ये क्या था, ये इंडिया का, it was one of the first successful nuclear tests of India, to be more specific. तो ये तब हुआ था when Indira Gandhi was prime minister and सबसे बड़ा रोल इसमें इनका रहा था. And I must not miss out here कि इसके बाद से वो होता ना, जैसे कुछ इवेंट हुआ इसके बाद से ये जाने लगे, तो ऐसे ही ये जो पोखरान द फर्स्ट टेस्ट हुआ था, इसके बाद से राजा रमन को बहुत ही ज्यादा वो फेमस हो गए एंड ही बिकेम a very eminent personality after that. And I must not miss out here that he became the recipient of Padma Vibhushan. That is the second highest civilian honor, I must say. So the next one is Pokhran the second. Second nuclear test हुआ था इंडिया का. It was also successful in Rajasthan only, and it took place in May 1998. So 5 nuclear bombs की इसमें टेस्टिंग हुई थी and ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी इसको जाना जाता है. मुझे कहना चाहिए इसमें जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, पीपल्स प्रेसिडेंट, earlier when this took place, this Pokhran the second, he was the one who led the group of scientists and इन्होंने बहुत important उसमें रोल प्ले करा, पूरी इन्होंने गाइडेंस दी and whatever necessary knowledge is required, whatever is required like the testing etc, which I had been discussing so far, he actively participated in those events. And उस time अटल बिहारी वाजपेयी, he was the PM and उनके ये एक scientific man रहे, मतलब सारी जो साइंटिफिक डाटा, जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस पोखरान द सेकंड से रिलेटेड थी, इन्होंने सारी उनको प्रोवाइड करी. अब here as I am talking about अटल बिहारी वाजपेयी, I must not forget about him that जब 1988 में इलेक्शंस हुए थे, he was from BJP, so इन्होंने कहा था कि जब ये इलेक्ट हो जाएंगे तो he will be working on nuclear power projects and yes, he did work on that. एंड इसके बाद से, पोखरान द सेकंड के बाद से अब्दुल कलाम को और ज्यादा अच्छे से जाना जाने लगा एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स ऑफ दैट एरा. सो अब हर चीज के दो पहलू होते हैं, यस, एंड न्यूक्लियर पावर इज नो एक्सक्लूजन टू इट. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट प्रोस एंड कॉन्स ऑफ न्यूक्लियर पावर. व्हाट आर इट्स मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? सो सबसे बड़ा एडवांटेज तो न्यूक्लियर पावर का यह है कि ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. अगर हम इसको
सेंसिबली यूज किया जाए अगर, सो it is one of the best sources of energy known on earth. But if we use it in another manner, like if we are using it to make nuclear weapons, then atomic bomb, and it is one of the most dangerous weapons. So advantages में basically ये आता है कि it is a renewable source of energy, nuclear power plants, and it is clean and carbon free. कोई कार्बन एमिशंस इसमें नहीं होते हैं, एंड जो द लैंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेटिंग अप ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दैट इज लेस. बट फिर ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो वो ऑपरेशनल जब वो हो जाते हैं तो दे जनरेट न्यूक्लियर वेस्ट. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि वो जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट करते हैं दैट इज रिगार्डेड एज हाई लेवल वेस्ट. क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है एंड दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर ह्यूमंस. वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है. सो और भी कई डिसएडवांटेजेस भी हैं. मैंने एडवांटेजेस की बात करी, डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करूं तो दो स्टेप्स उसमें होते हैं बेसिकली, प्लानिंग एंड ऑपरेशन. जो प्लानिंग उसकी होती है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. जब इसकी प्लानिंग की जाती है तो बहुत सारी चीजें वी हैव टू कीप इन माइंड, लाइक क्या यहाँ पर रिसोर्सेज होंगे तो क्या नियर बाय अवेलेबिलिटी होगी. एंड ऑपरेशन आई मीन इनिशियली द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप that is very high. They are very expensive to set up. But as they start operating, then the cost is relatively cheaper. Not just that. One more thing I would like to say here कि आप जैसे I think this is chimney only of nuclear power plants. सो इसमें से जो एमिशंस निकलते हैं, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हमारा यह है कि इसमें से स्मोक निकलती है. स्मोक comes out of it which contains radioactive waste. No, that is water vapor. बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का ये. इवन मेरा भी था, टू बी ट्रू, मेरा भी था. बट इट इज नॉट लाइक दैट कि वाटर वेपर्स है. दूसरा ये कि एनवायरमेंटल हजार्ड्स भी कुछ इससे होते हैं, क्योंकि यूरेनियम की जैसे माइनिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें रेडिएशंस एमिट होने का खतरा बना रहता है एंड एनवायरमेंटल हजार्ड्स. सो इससे रिलेटेड काफी ज्यादा प्रोटेस्ट्स भी हुए थे. व्हाई? बिकॉज मैंने अभी सारे आपको डिस्क्राइब करे कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं. वाटर पॉल्यूशन भी इसकी वजह से होता है. सो इसकी वजह से प्रोटेस्ट्स करे गए. कहां पर करे गए? इन Tamil Nadu, southern India, basically for the Kundankulam nuclear power plant, and the other one is for the Jadpur nuclear power plant, which is in Maharashtra. तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करे गए कि no, we do not want nuclear power plants. We don't want water to get polluted. We do not want any harm to the environment. क्योंकि अभी भी लोग बहुत ज्यादा एप्रीहेंसिव है कि क्या हमारे लिए ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी निकल कर आएगा. Because yes, it is a renewable source of energy, but the exception is uranium-238. वो non-renewable है. So, as I have discussed in detail about the pros and cons of nuclear power, now I would like to proceed towards India and nuclear power. India कैसे देखता है nuclear power को? India कहाँ पर stand करता है in terms of nuclear power? So, firstly, in terms of world, if मैं world के data की बात करूं, America is the most prominent nation to use nuclear power, and India, it is on 7th position to use nuclear power. Here, this is the statistical data. It speaks for itself. India is on 7th rank with 22 nuclear reactors are there, and the net generation capacity currently it is 6.7 to 6.9 gigawatt. So here the red one, it symbolizes the net generation capacity, and the blue one, it symbolizes number of reactors. Number of reactors in India are 22, and the net generation capacity, that is approximately 6.78 gigawatts. So what is India's share in nuclear power? So अगर हम इसको डिटेल में देखें, इंडिया में आफ्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, आफ्टर सोलर एनर्जी,
after thermal energy and other renewable sources of energy, nuclear power is the fifth one जिससे इंडिया अपनी इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करता है. कितना? Now there must be data ना, 3.11%. So 3.11% जो इलेक्ट्रिसिटी टोटल होती है इंडिया की, वो न्यूक्लियर पावर से एक्सट्रैक्ट की जाती है. So 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इंडिया में, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड 6.780 गीगावाट्स और 6,780 मेगावाट्स के हैं. एक और यहाँ पर मिसलीडिंग डाटा कई बार बताया जाता है कि 7,380 कई सारी वेबसाइट्स पर दिया गया, बट दैट डाटा इज मिसलीडिंग. दिस इज द करेक्ट वन. नाउ मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर रही थी. दिस इज द मैप. 7 nuclear power plants in 7 different states. First is in Uttar Pradesh, then in Rajasthan, in Gujarat, in Maharashtra, in Karnataka, and there are 2 nuclear power plants in Tamil Nadu only. One is Kalpakkam and the other one is Kundankulam. And यहाँ पर मैं एक और इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगी कि जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दैट इज रिगार्डेड as India's largest nuclear power plant. 2000 megawatt of nuclear power electricity उससे extract करी जाती है, the highest in India. Now here I would like to provide the statistical data. कैसे from 2010 to 2022 India की net generation capacity in terms of nuclear power increase होती गई. So this is the data. And यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2020 and 2022 में लगभग सेम रहा, बट 2021 में थोड़ा कम हो गया. Why? Because amid the ongoing COVID. So लगभग सेम रहा, although 2022 में फिर भी it was more the net generation capacity. Currently it is 47.33 terawatt hours or so. Now comes my favorite topic among these. That is the 5 incredible ways nuclear energy powers our lives. So, not just nuclear power plants and nuclear atomic bombs, much beyond than that. The first one is space exploration. So, अब space exploration में कैसे जो आपके रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम्स होते हैं, RPSS. So बेसिकली ये एक तरह के स्पेसशिप सी मतलब न्यूक्लियर पावर सोर्सेज ही होते हैं, रेडियो आइसोटोप से दे आर मेड. एंड इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि दे कैन विथस्टैंड सिवियर कंडीशंस, बिकॉज इन डीप स्पेस बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि नो एयर. वैसे तो स्पेस में नहीं होती एयर, बट डीप स्पेस इट हैज मोर हार्श कंडीशंस. नो एयर, नथिंग देन दैट. So these radioisotope power systems, they can withstand that conditions, and with the help of these radioisotopes, ये जो RPSS about which I am talking, इनकी हेल्प से कई सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन missions हैं to various planets like Jupiter and Saturn. We can accomplish these missions with the help of these radioisotope power systems. Especially I would like to say about Jupiter, because Jupiter is an extremely radioactive planet and उसकी बहुत ही deadly radiations होती हैं, and these spaceships can withstand those conditions. The another one is nuclear energy, about which I had been talking about for so long. So nuclear energy, न्यूक्लियर पावर से ही एक्सट्रैक्ट करी जाती है. सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में इसको यूज किया जाता है, एंड it is the largest source of clean energy in America. Medical diagnosis and treatment is another field in which nuclear power is extensively used. Like, again, I would like to say America, the most prominent nation to use nuclear power, even in medical diagnosis also. So what are the various procedures, various techniques? Nuclear medical imaging, etc. जैसी techniques हैं जिसमें nuclear power को use किया जाता है. Not just that, हम यहाँ पर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की भी बात करते हैं, बिकॉज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट. जो डॉक्टर्स होते हैं, दे यूज रेडियो आइसोटोप्स फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स. बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि इट्रियम 90, ल्यूटियम 177, कोबाल्ट 60, एटसेट्रा, एंड ऑल्सो सीशियम 177. सो ये सारे आइसोटोप्स को भी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करा जाता है. बेसिकली पेशेंट का
उस बॉडी पार्ट को टारगेट करा जाता है विच इज ट्यूमर इन्फेक्टेड, उस पर आयोनाइजिंग रेडिएशंस एमिट करी जाती हैं एंड अदर बॉडी पार्ट्स आर कवर्ड सो दैट वहां पर रेडिएशंस ना जाए एंड दिस इज हाउ वहां पर ट्यूमर सेल्स का साइज रिड्यूस हो जाता है एंड द पेशेंट इज अल्टीमेटली रिलीव्ड। कोबाल्ट 60 इज द रेडियो आइसोटोप जिसको सबसे ज्यादा उसमें यूज करा जाता है। The another one is criminal investigation. Criminal investigations में बहुत ज्यादा रेडियो आइसोटोप्स को यूज किया जाता है। One, let me give you one of the commonest example of this. What? Forensic detail. Forensic data criminals का obtain करने के लिए DNA fingerprints उसको obtain करने के लिए X-ray यूज करा जाता है to find the culprits etc. Not just that. There was one case in America जहां पर ionizing radiation of gamma rays that was used and जो criminal था उसकी gum imaging obtain करी गई and with the help of that it could be found out that he was the culprit and then he was arrested. In agriculture also it is extensively used and one of the interesting applications in agriculture, radioisotopes are used in agriculture instead of chemical pesticides, but here nuclear decay is used. We do not want to use nuclear fission because it is expensive and we are talking about cost effective sources of energy. So nuclear decay is used. Radioisotopes such as phosphorus 32 and nitrogen 15, they are used specifically. So basically insects को एक मीडियम में कल्चर करा जाता है एंड फिर उनको जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस गामा रेज होती है उनमें एक्सपोज कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ विच उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है एंड वंस एंड फॉर ऑल आफ्टर दैट फिर पॉपुलेशन एक बार में खत्म ही हो जाएगी। देन फूड को इरेडिएटेड भी करा जाता है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई मीन दैट कि food, it is taken in some storage, then it is exposed to gamma rays, ionizing gamma rays. So what is done in that? Microorganisms, germs which are infecting the food, that are killed, and your food hai, that is sterile. I want to say it is free from germs and all that. And because of it, हमें फिर refrigeration की भी जरूरत नहीं पड़ती है. Now India's initiatives. So I would like to talk about the recent one. Which took place on 1st September 2023 in the Kakrapa nuclear power plant. उसका third subunit setup किया गया था. Actually 30th June तक it became 90% operational, but fully operational it became in September only. And PM Shri Narendra Modi ji, he also congratulated the associated scientists and engineers on the social media platform X, and he said that एक milestone achieve कर लिया गया है. Then moving further, April 2023 में भी the central government of India उन्होंने 10 nuclear reactors का installation approve कर दिया था across the 5 states such as Madhya Pradesh, Haryana, Karnataka, to name a few. These are the key features like 1 lakh crore rupees that will be spent on it. And इसके बाद से जो हमारी anticipated generation capacity है, we will be at 22,480 megawatts by 2031. अभी हमारा 6,780 है, but 22,480 megawatts we will be able to achieve by 2031. Next, the Nuclear Power Corporation of India Limited, जो कि इंडिया के सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कंट्रोल करती है, उन्होंने भी वो भी प्लान कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंस्टॉल करेंगे एंड जिसके लिए उन्होंने फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस भी दे दिए हैं. आई वुड लाइक टू से फर्दर इंडियाज फ्यूचर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, जो इंडिया के फ्यूचर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स है, अभी करेंटली 6 nuclear power reactors they are under construction in India, जिसके बाद से हमारी जो anticipated net generation capacity है that will be 9,000 megawatts. Now I would like to conclude by saying that nuclear power is definitely a progressive idea for all of us. Like अगर हम न्यूक्लियर पावर को यूज कर रहे हैं, इट इज अ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंडिया में बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है न्यूक्लियर पावर का. व्हाई? बिकॉज इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल केरला, जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल थोरियम रिजर्व्स वहां पर
abundance में मिले जाते हैं, and nuclear power plant setup इधर हो सकते हैं, and we can generally, obviously we can proceed towards a cleaner future, and this can reduce our reliance on fossil fuels. Thank you. Thank you so much, Ms. Bhavya. That was such a well researched and a very knowledge oriented session from your end. You were definitely the youngest speaker of this platform, but definitely you were one of the best ones that we have had so far. So you presented, on such a crucial topic that is obviously promising for the future, but also has several misconceptions attached to it. So you clarified all of them, and you gave new ideas to this entire domain of nuclear energy, nuclear power, and India's future in it. So now we would like to request you to proceed. We'll proceed ahead with the question and answer round, and where you are requested to answer the questions that were put forth by some of our inquisitive listeners. So the first question. Is by Mr. Manthan, and he is asking that how can we compensate the people or the lives of the people where these nuclear reactors are being set, knowing the possible negative health and the other outcomes which are negative. So how can we compensate for those things? So what would be your answer to it? Compensation is very important. एंड वहां पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सेटअप करे गए हैं, नियर जो वहां नियर बाय पीपल हैं, सबसे पहले उनमें अवेयरनेस क्रिएट करी जाए। एंड अनदर वन इज दैट दे शुड आल्सो अडैप्ट सम प्रिकॉशंस, जैसे कि फर्स्टली थोड़ा सा तो दूर होना ही चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट से, उनकी लोकेलिटी, सो दैट रेडिएशन एक्सेट्रा ना आए। एंड उनका जो इतना ज्यादा एप्रीहेंशन है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट एक्सेट्रा निकलेगा, बिकॉज वाटर पॉल्यूशन इज अ मेजर इशू रिलेटेड टू दिस, तो उसको भी टैकल करा जाना चाहिए। या तो सुटेबली उसको ट्रीट करा जाना चाहिए, फिर उसको वाटर बॉडीज में रिलीज करा जाना चाहिए। एंड उनको भी कुछ अडेप्टिव मेजर्स आई थिंक सो लेने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सा दूर रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट से। नॉट दैट कि दे आर वेरी बैड, बट कुछ ना कुछ रेडिएशन एक्सेट्रा होती हैं उससे, तो थोड़ा सा उस चीज को कंपनसेट करना होगा। थैंक यू। All right, so you mean that habitating them in a safe distance, at a safe distance. डेफिनेटली Yeah, डेफिनेटली। it's would be better for their lifestyle. All right, so the next question is by Miss Manvi, and she is asking that can you suggest some ways of disposing the waste that is generated from these reactors? So the correct measures of waste disposal. न्यूक्लियर पावर प्लांट से वेस्ट जो जनरेट होता है, कई सारे प्रोसेसेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करे जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, स्टेप बाय स्टेप रिमूवल ऑफ द रेडियो एक्टिव एफ्लुएंट्स, आई मस्ट से, वो करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज अल्टीमेटली दैट वेस्ट हैज टू बी रिलीज्ड इन वाटर बॉडीज। जब हम सीवेज ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं, वहां पर भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर भी हमें सीक्वेंशियल ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट, स्टेप बाय स्टेप रिमूवल, इट कैन बी सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन ऑफ अ स्पेशल काइंड, जिसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट का बहुत बड़ा पार्ट रिमूव होना चाहिए। So that is very crucial. All right, Miss Bhavya, and one more question that is being asked by Mr. Saurabh, and he is asking that परमाणु ऊर्जा के उपयोग को विनियमित करने के लिए, that is, to regulate it, what are the measures do you think exist on, for regulating nuclear energy or nuclear power as a whole? So, what are your views on it? So न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा यही होता है कि इफ वी आर नॉट यूजिंग इट सेंसिबली, उसमें चेन ऑफ रिएक्शंस होती जाती हैं, फिर रेडिएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उसको सेंसिबली हमें यूज करना चाहिए। जो भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्सेट्रा यूज कर रहे हैं, दे शुड बी स्टोर्ड इन लार्ज कंटेनर्स, एंड उनके जो वेसल्स होते हैं, उनके स्पेसिफिक वेसल्स आते हैं जिसमें उनको स्टोर करना, वो करना चाहिए। एंड step by step treatment, every treatment needs to be carried out cautiously. All right, Ms. Bhavya, very well answered. You like the answers were very interesting and very, you were very confident in answering all the questions. There is one last question from the team of GSTS where we would like to know about how was your experience working with the team and preparing the talk and the entire journey with the platform. So how was it?
It was an amazing experience for me, and it was very new also, क्योंकि I was earlier in speaking, पहले भी मैंने स्पीकिंग में पार्ट लिया है, बट ऐसा कभी प्लेटफॉर्म मुझे पहले मैंने इसके बारे में नहीं सुना था। एंड जब मैंने सुना, सो आई वाज वेरी हैप्पी कि आई वुड लाइक टू कि मेरे को इतना ज्यादा रिसर्च करने को मिलेगा। न्यूक्लियर पावर में मैं शुरू से इंटरेस्टेड थी, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड हियर आई एम अलाउड टू स्पीक सो मच ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। रिसर्च मेरे को इसमें करने का मौका मिला, एंड मेरे स्पीकिंग स्किल्स इससे इम्प्रूव हुए। एंड आप सबके जो सजेशंस थे उस पर मैंने वर्क करा, एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा, एंड इट वाज वेरी न्यू आल्सो, इट वाज माय फर्स्ट टाइम।